हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ यूडब्ल्यू। तो यूडब्ल्यू के फर्स्ट चैप्टर में इल्यूमिनेशन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं। और लेक्चर 1 में पूरा सिलेबस यूडब्ल्यू यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों पढ़ना जरूरी है वो हमने समझा था, और सिलेबस में क्या क्या कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो देखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 यूनिट 1, दैट इज इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। वी विल स्टडी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, मींस डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, एंड द डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन एंड द यूनिट्स किसमें मेजर होता है, दैट वी विल स्टडी। एंड देन डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू ઇલ્યુમિનેશન ઇલ્યુમિનેશનના રિગાર્ડિંગ જેટલા નિયમો છે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે એ આપણે જોઈશું. એન્ડ દેન different types of lamps, its fittings, working and applications. Okay, that we will study in upcoming topics. Okay, in today's lecture we will study about what is illumination, what is the difference between light and illumination, and main important thing, the relationship between wavelength and frequency, that we will study. Okay, let's start first. Why we need to study about illumination, why it is necessary as an electrical engineer. Illumination is due to light. Okay, but there is some difference between light and illumination. Okay, that I want to show you one image. आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ फोटो. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो. Yes, this photo you can see over here. Luminance means luminous object, means source. वो प्रकाश फेंकता है, लाइट को वो બહાર નીકળતા है, मीन्स लाइट એનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે, પ્રકાશનું ઉદ્ભવ સ્થાન, that is light source. ઓકે, उसके गुजराती में हम स्रोत बोलते हैं. तो लाइट નો સ્ત્રોત, પ્રકાશનો સ્ત્રોત, that is called luminous object. Okay, so light જ્યાંથી આવે છે that is luminous object or luminescence, and જે સપાટી ઉપર લાઇટ પડે છે, on which surface light is reflected or emitted. So whatever the light on surface, that is called illuminance. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा. That is the difference between luminance and illuminance. So let's start remaining topic. So light is the requirement of daily need. દરરોજની આપણે જરૂરિયાતમાં લાઇટ છે એનું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઓકે, હવે આજકાલ તો લાઇટ વગર ચાલે જ નહીં. થોડી વાર પણ લાઇટ જતી રહે 1 કે 2 કલાક તો પણ આપણા ઘણા કામ અટકી જાય એવું આપણે ફીલ થાય. સો actually we know that the main primary natural source of light is what? Sun. Okay, we know that it's a sun, prime natural source of light. But right now artificial lighting plays most important role in our daily life. Artificial lighting means કૃત્રિમ light, માનવ જાતે ક્રિએટ કરેલી હોય એ. તો lamps, tube lights, this all is artificial light. Okay, it runs by electricity. So right now એનો આપણી લાઈફમાં ઘણો જ અગત્યનો રોલ છે. ભલે સન છે એ મેઇન પ્રાઇમ નેચરલ સોર્સ છે લાઇટનો, એમાંથી સન એનર્જી, હીટ એનર્જી મળે. પછી by using solar and wind energy we will convert it into electrical energy, right? This is different thing. But this artificial light produced by human, okay, that is in two way. One is by mechanical lamps, another one is by electrical lamps. So તમે કદાચ મિકેનિકલ લેમ્પનું નામ નહીં સાંભળ્યું હોય, બટ હું તમને ઇમેજ બતાવું તો ખ્યાલ આવી જશે. Due to poor performance of mechanical light, it is totally replaced by electrical lights. So because electrical light is very successful, very efficient, that's why mechanical light का सिर्फ हम ऐसा कह सकते हैं उसका सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही हुआ था, वो फिर उतना सक्सेसफुल रियल लाइफ में नहीं रहा. So let's see which are the mechanical lights. So you can see over here in photo, मैंने already सर्च करके रखा है. This is mechanical light. Here are some mechanical movements or devices. Okay, उससे mechanical force मिलेगा या उससे light on होगी. Here you can see one more example of mechanical light. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हो. This is one more. तो यहाँ पे हैंडल से हम घुमाएंगे ये. If we rotate this
इक्विपमेंट, ओके। तो क्या होगा, ये चेन पूरा रोटेट होगा और वो रोटेशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये लैंप ऑन होगा। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल लैंप, बट इट्स नॉट सक्सेसफुल, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। तो इसलिए वट एवर वी आर यूजिंग राइट नाउ एट अवर होम, लैंप्स, डिफरेंट लैंप्स, ट्यूबलाइट्स, एलईडी, सीएफएल, उससे पहले वो रेड कलर वाले लैंप आते थे, ओके, रेड लाइट वाले, ओके, दिस ऑल आर इलेक्ट्रिकल lights, street lights, okay, these all are electrical. These electrical lightings are mainly used for, we know that, mainly for uh, decorative purpose, advertising purpose, traffic control, medical field, and street lighting. Means in many instruments एलईडी ब्लिंक करती रहती है, तो वो भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन देने के लिए लाइट ही यूज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज, ओके। सो राइट नाउ इन अवर डेली लाइफ इलेक्ट्रिकल light is very essential part. So this is introduction about light. Now why electrical light is best? Due to cleanliness, easy to control, इलेक्ट्रिकल स्विच से हम इजीली ऑन ऑफ कर सकते हैं डिवाइस को, इकोनॉमिकल, बहुत ही सस्ती है, इट्स वेरी चीप, इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब्स, सो टोटल रिक्वायरमेंट और टोटल उसका जो खर्चा होता है वो कम होता है। और मैकेनिकल लाइट का हम देखें तो वो इतना कन्वीनियंट भी नहीं है, इजीली हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट, इजी टू हैंडल, स्टेडी आउटपुट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टेडी रही तो लैंप का आउटपुट हमें कांस्टेंट मिलेगा, वी गेट कांस्टेंट लाइट, ओके, और लाइट इंटेंसिटी, बेटर रिलायबिलिटी, तो ज्यादा खराब नहीं होते, ओके, ज्यादा उसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं आता है, और 3-4 साल होने के बाद ही रिप्लेस करना पड़ता है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही लेस मेंटेनेंस आता है, तो रिलायबिलिटी ज्यादा कह सकते हैं, इजी टू यूज, सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप, ऑल पर्पसेस। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के ये सब फायदे हैं और हम उसे ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। Velocity means speed of wave, okay, speed of, we can say that if it is light energy, then speed of light, okay, frequency गुजराती में आवृत्ति कहिए, वेव लेंथ, ओके, तो टोटल वेव की जो लेंथ होती है वो। तो चलिए ये सब को समझने के लिए एक फिगर पहले देख लेते हैं। सी, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, you can see over here. See, time to complete one cycle is very less. T is less, so frequency is high. T is less, time to complete one cycle, that is called time period. एक साइकिल पूરું થવા માટે લાગતો સમય કોઈ પણ વેવ ને, okay, that is called time period. So if time period is less, frequency is high, we can easily understand. So same way, wavelength is peak to peak, means maximum amplitude to next maximum amplitude, એના વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એને આપણે વેવલેન્થ કહીએ। મીન્સ ઇન શોર્ટ, બે સાયકલના જે હાઈ પીક પોઈન્ટ છે એની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ટુ વેવ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વેવ લેન્થ. સો ધીસ ઇઝ વેરી શોર્ટ. Why? Because time period is less, frequency is high. Time period is less, so frequency is high, and that's why wavelength is represented by lambda, that is also less, okay. And in opposite way, if frequency is less, what is the reason frequency क्यों less हो सकती है? The time to complete one cycle by any waveform, that is called time period. So if time period is more, then obviously wavelength will be large, okay, the length between two wave, okay, two peak to peak point, okay. So if time period is more, then frequency is less, and so again if frequency is less or low, then wavelength is high. Wavelength is represented by lambda, this is called wavelength. So I hope आपको रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ समझ में आ गए होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको जब भी ऐसा लगे ये इंपॉर्टेंट इमेज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द relationship between these three words, velocity, wavelength and frequency? Velocity is represented by v,
Okay, remember it's velocity, not voltage. V. Okay, frequency is represented by F and wavelength is represented by lambda. Now wavelength in the word length itself, in the other is length, so it is measured in meter. Okay, frequency is measured in hertz, standard unit. Okay, and the velocity is measured in, as per SI unit, meter per second. So as we all know that what is the standard definition of uh, velocity. Okay, you all must remember that distance traveled by any distance travel per unit time, that is called velocity. Okay, v is equal to d upon t, or speed s is equal to d upon t. Now if we replace this speed by this velocity, that is v, and this distance travel, you can compare it with distance travel, you can compare it with wavelength, length. Okay, so wavelength is measured in meter, so you can compare this distance with wavelength, so that is lambda, that is also measured in meter, and the time taken, so that is same as f. As we all know that f is equal to 1 upon time period, so this t is time, so you can write over here time t. Now if we separate this 1 upon t from lambda, then lambda multiplied by 1 upon t, that is equal to v. Okay, so now v is equal to, what you can write, velocity is equal to lambda, and what is 1 upon t, that is frequency, that is frequency. So finally you will get, if you want to make subject lambda, अगर आपको वेवलेंथ को सब्जेक्ट बनाना है, लेमडा इज इक्वल टू, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या कहां पे आ जाएगी, इन डिनोमिनेटर ऑफ वी, वी ना छेद में एफ આવી જશે. ओके, सो दैट इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. So this equation is directly given in your book. I have explained here how it is derived. मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि वो कैसे हम derive कर सकते हैं. This equation is directly given in your textbook. So wavelength is equal to velocity of wave divided by frequency of wave. Okay, velocity is measured in meter per second, and frequency is measured in hertz. So, and hertz is nothing but that is 1 upon second, because f is equal to 1 upon t. So hertz is nothing but 1 upon second. Okay, and 1 upon second, and so this second will go in numerators, this second will be cut. So finally the unit of lambda is meter, and we all already know that wavelength is measured in meter. Okay, but जनरली वेवलेंथ को नैनोमीटर और ऐसे स्मॉल यूनिट में मेजर करा जाता है. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ लार्ज, वी कैन से दैट डिस्टेंस और लेंथ. ओके, सो आई होप आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी समझ में आ गया होगा. वन मोर थिंग, द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये लाइट की स्पीड है, आप सबको याद होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ओके, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो आप ये मीटर का आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो आपको अंदाजा आएगा. तो किलोमीटर में करना है तो 3 0 निकाल देने, यू हैव टू कट 3 0. तो 3 into 10⁵, 3 into 10⁵ मींस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम. ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं इसको क्लियर कर देता हूं पहले, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. आपकी बुक में डायरेक्टली ये इक्वेशन दिया गया होगा, जिसमें ये वेवलेंथ लैम्ब्डा का इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू वी एंड एफ दिया गया है. ठीक है, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं. आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें आपको इल्यूमिनेशन क्या है वो मैं समझाता हूं. तो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूमिनेशन एंड लुमिनस. Okay, luminous is whatever the light source light emits, that is called luminous.
ઓકે, લાઇટ જેટલી ફેંકે છે એને જ આપણે લ્યુમિનસ કહીશું. ઓકે, બટ whatever the light is reflected at particular or emitted at particular surface, that is called illumination. તો નીચે લાઇટ પડે છે ને illumination કહેવાય, જે લાઇટ નીકળે છે ને luminance કહેવાય છે, બીકોઝ જે લાઇટ નીકળશે એ ફેલાઈ જશે, સ્પ્રેડ થઈ જશે. ઓકે, इलेक्ट्रिकल लैंप्स आर प्रीफर्ड बिकॉज हमने अभी उसके एडवांटेज देखे कि वो क्लीनलीनेस है, कन्वीनियंस है, स्टेडी लाइट आउटपुट देता है, रिलायबल भी है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल लाइट और इलेक्ट्रिकल लैंप. नाउ सी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इल्यूमिनेशन. इट्स नॉट अ फाइट, इट्स अ लाइट. देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, करेक्ट करता हूँ. लार्ज डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड इल्यूमिनेशन. जो लाइट सरफेस पे पड़ती है that is वो ऑलवेज इल्यूमिनेट होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन इज द लाइट अवेलेबल ऑन सरफेस. सरफेस मीन्स सपाटी ઉપર જે લાઈટ પડશે એને ઇલ્યુમિનેશન કહેવાય. તો લેમ્પની નજીક સરફેસ હશે તો ઇલ્યુમિનેશન વધુ હશે, લેમ્પથી દૂર સરફેસ હશે તો એ સરફેસ ઉપર ઇલ્યુમિનેશન ઓછું હશે. સિમ્પલ સમજી શકાય એવું છે. બટ લ્યુમિનસ ત્યારે જ ચેન્જ થાય જ્યારે સોર્સ બદલાશે. whenever source change luminous change, otherwise luminance will not change. okay, but illumination સપાટી સરફેસ કેટલી વધારે આગળ પાછળ છે એના પ્રમાણે બદલાશે. ઓકે, તો આઈ હોપ the difference between illumination and luminance is clear in your mind, or difference between light and illumination is clear in your mind. okay, illumination of the surface, in this way we can say that is governed by amount of light falling on it. સરફેસ ઉપર જે લાઈટ પડશે ને એના પ્રમાણે illumination कंट्रोल થશે. ओके, सो luminous flux, उसको शॉर्ट में देखो LU, तो LU और ये फ्लक्स का X ले लिया लास्ट में से, तो LUX लक्स भी बोलते हैं कई बार. सो द illumination is defined by luminous flux received per unit area. चलिए ये समझाने के लिए मैं आपको और एक फिगर बताता हूँ. यहाँ पे you can see over here one figure. see, so this is called luminance. इसको क्या बोलते हैं हम? luminance. यहाँ से लाइट जो आ रही है, whatever the light coming from bulb, that is called luminous flux. okay, उतना तो मिल ही रहा है. जब ये सोर्स चेंज होगा तभी luminous flux चेंज होगा. so this is constant always if source is not changed. but ये देखो जो भी ये देख रहा है, वो जो भी सरफेस पे देख रहा है, फॉर एन एग्जांपल एट दिस सरफेस illuminance is something. okay, but अगर वो सरफेस यहाँ पे होती then illuminance is different, because वो सरफेस है वो सोर्स के नजदीक होगी, तो वहां पे सरफेस पे जो लाइट आएगी वो डिफरेंट होगी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड luminance flux lux. ओके, LUX. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से हम वापस प्रेजेंटेशन में चले जाते हैं. तो luminance flux received from bulb or lamp from light source per unit area on particular surface. okay, that is called illumination. તો કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એરિયા ઉપર પર એરિયા કેટલું લાઇટ આવે છે, that is called illumination. okay, so light luminance flux मेजर होता है कैंडल पावर में. कैंडल पावर मल्टीप्लाई बाय सॉलिड एंगल. अभी ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा और W, यू कैन से दैट सॉलिड एंगल. अब देखो ये सॉलिड एंगल समझाने के लिए भी एक इमेज मैंने सर्च करके रखी है. चलिए मैं समझाता हूँ. यहाँ पे सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय W, ओमेगा. ओके, चलिए मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ. चलिए यहाँ पे ये रही फिगर. ओके, सी आप देख सकते हो यहाँ पे. अब मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ. ये देखो, अब यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे कोई एक टॉर्च है. ठीक है, तो टॉर्च से आपने लाइट कर दी है ऑन. तो ये टॉर्च से अगर आप सरफेस यहाँ पे कंसीडर करें तो ये 360 डायरेक्शन में ये टॉर्च का लाइट है वो स्प्रेड हो जाएगा. लाइट ऑफ टॉर्च इज स्प्रेड. सो व्हाटएवर द एंगल वी आर कंसीडरिंग इन 3 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. ओके, तो ये 360 डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हो गई, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये सॉलिड एंगल चेंज हो जाएगा. देखो अभी ये डिस्टेंस इतना है, इसको हम D1 D कह देते हैं. इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम सोर्स मींस लाइट या टॉर्च से लैंप से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो सॉलिड एंगल है उसका एरिया है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा.
ठीक है, it is increased. Okay, if distance increase from source, then this solid angle and accordingly the luminance area increases. Okay, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर से हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन में। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये सबसे पहले ये सॉलिड एंगल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओमेगा मींस solid angle. Now this solid angle is what? Area per distance from light source. Area covered per distance from light source. That I already explained. Okay, थोड़ी देर पहले जो लाइट में समझाया था वो। Now if you put this area upon D is equal to omega and luminance flux is equal to what? Candle power Cp, okay, multiply by W upon area is as it is. Now omega is equal to what? Already area upon D. Now Cp upon area is equal to Cp upon area is equal to now Cp upon area multiply by omega is equal to what? Area upon D means distance from source. तो स्रोत थी कितलू डिस्टेंस से a, बराबर। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? कट। आई हैव रिप्लेस दिस ओमेगा बाय एरिया अपॉन d, ओके, एंड रिप्लेस दिस लुमिनस फ्लक्स विथ Cp अपॉन Cp मल्टीप्लाई बाय omega, okay. So finally we got Cp upon d over here is equal to illumination, that is candle power per distance. अब ये इल्यूमिनेशन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए कुछ उसके रिलेटेड टर्म्स और डेफिनेशन है वो हमें समझनी पड़ेगी। ये सब डेफिनेशन हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे लाइट है, लुमिनस फ्लक्स है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में सभी डेफिनेशन हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक जितना मैंने चलाया, वॉट एवर यू लर्न टिल नाउ, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू सेंड इन गूगल क्लासरूम एज एन assignment. Okay, I will assign you assignment till Monday. Okay, so your homework up to lecture number 3 you have to submit at Google Classroom. Okay, आपको लेक्चर 3 तक का एक साथ होमवर्क गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। मैं मंडे को अलॉट कर दूंगा, आप लिख के रेडी रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें इल्यूमिनेशन रिलेटेड आगे के टर्म समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर।